काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं कि मैंने 99.99 परसेंटाइल लाने के लिए कौन से मॉक्स यूज़ किए थे और कैसा मेरा मॉक स्ट्रैटेजी था। तो इन दिस वीडियो आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू। मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे 15 मॉक दिए थे एंड आई बॉट मॉक्स फ्रॉम IMS एंड टेस्ट फंडा। ये 15 मॉक्स को देखे और अच्छे से एनालाइज करके आई एंश्योर दैट माई स्पीड, एक्यूरेसी एंड माइंडसेट is at the level needed to crack the CET exam and get into JBIMS. इसमें से I learned a couple of things that students should look for in a mock test. पहले कि वो mock कौन कौन ले रहा है और कैसा उसका competition है. So the mock needs to be given by enough people and also serious aspirants ताकि आप अपना competition और आप अपना level gauge कर सकते हो. Secondly, the difficulty of the mock should not be too high or too low and it should be at par to the recent CET papers. These are the things that you should look for. तो कोई भी मॉक लेने से पहले आई वुड सजेस्ट कि ये दो फैक्टर को चेक कीजिए एंड गो फॉर 2 to 3 मॉक टेस्ट सीरीज टू गेट अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट 20 to 25 mocks because that is, I think, the right number to attempt. And if you analyze these many mocks perfectly, then you will be set and you will be able to crack CET. To help students, TTP ने भी mocks launch किए हैं. We had mocks last year as well and उसका भी feedback काफ़ी अच्छा था from students. A lot of the questions CET के पेपर में directly आए थे. इस साल हम लोग ने CET 2025 के पेपर पैटर्न के हिसाब से मॉक्स अपडेट कर दिए हैं. तो इट विल बी एज पर CET डिफ़िकल्टी and it will be taken by very serious aspirants and a high number of aspirants because 31 students from the top percentile are into JBIMS this year. So you can go for that. Also, we have introduced something really interesting this time. We have 5 benchmarking mocks in TTP. तो इसका मतलब ये है कि these are the same mocks taken by last year's students who got into JBIMS. So you can give the same mock as them and compare directly with the score that they got in the mock so that you know exactly where you stand if you want to get into JBIMS. So आपको exactly वो comparison मिल जाएगा and this is nowhere done before. During my preparation I used to feel कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि last year के student को इस mock में exactly कितना आया so that I can refine my preparation. So this is something that we've launched newly. Another advice is that you should take past year papers of 2024 and 2025. During my time, CET did not release the question paper, so I did not have the opportunity to take them. But अगर आप CET 2026 के लिए prepare कर रहे हो, then you have to attempt all previous year papers of 2024 and 2025, all the slots. You can get these papers on our site. I'll leave the link in the description below. And hope this video was helpful. If you found it helpful, then please like and subscribe to this channel.